let's not go into much of the details because that is not officially given. And Tasif Ahmad comes in with his speedy and snappy raid, gets a running hand touch, left raider and gets out Vijay Kumar. And Vijay Kumar tried his best, but even Krishan Dul could not stop from behind the racing Tasif Ahmad. Right, so let's not get into the format of what happens in Circle Kabaddi, but what I really feel is, strong defenders, actually it becomes very tough for them to defend a raider in a Circle Kabaddi. So these back holes are a very, very important strategy. I have seen live, I have seen all the Kabaddi superstars play the Circle Kabaddi when we were on the tour of Haryana and Rajasthan. A lot of people play that. A very tough game, very, very tough game. And that is where the back hold skills is so important. Right, now, once again a do-or-die situation, and it is Rahul who is coming for the MURTHAL magnet. जी अब राहुल पर जिम्मेदारियां रहेगी। यहाँ पर सिर्फ उन्होंने ये इंश्योर किया कि बोनस मिल जाए। शायद एक प्रॉपर रेडर उनके पास मौजूद थे नहीं, तो उन्होंने सिर्फ यही प्रयास किया। ये सोच जरूर वहां पर देखिए बोनस सिर्फ लिया। नवीन, इसमें आपका क्या यहाँ पर कथन होगा? कहना चाहेंगे क्या? This is cute. No, this is very cute. This is very cute and smart, I should say. Lot better than you going into the lobby without a connection on the defender. This is very good. It is in the spirit of the game, and Jwalaram has cleaned them up. MURTHAL Magnets face the first all out like they did against the Humpy Heroes, and this is happening for the second time. And Manish Dhul could not stop Jwalaram, and now the back hold also does not come into effect from Krishan Dhul. He was trying for 2 occasions, and on the third occasion Jwalaram gets that 2 points for the touch and 2 for the all out. Right, MURTHAL Magnets first all out conceded like they did against the Humpy Heroes in the challenger round. It's happening for the second time. Right, so I was just saying that was very cute by Rahul. See, it is in the spirit of the game. You know that you're in a do-or-die race. You know that you will be pinned down, and you just want to ensure that the score difference remains the same. As that was really well done by Jagdeep on the turn, and did not allow Kapil Gurjar to come across to cut the angle out. And that is 100 times better than you going into the lobby without a connection. Yeah. बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा कि यहाँ पर सिर्फ उन्होंने प्रयास एक अच्छी तरह से बोनस का किया था, परंतु इस बार जरूर यहाँ पर अरावली एरोज के लिए कुछ मौका है। राजीव सिंह यहाँ पर रेड के लिए जाते हुए नजर आ रहे थे। राहुल को देखिए जिस तरह से बहुत अच्छी तरह से अपने आर्म्स को स्ट्रेच किया और बिल्कुल अपना शिकार बनाया। पहले राहुल पूछ रहे थे भाई क्या कह रहे हो, उसके बाद वो लगे नहीं जो भी कह रहे हो सही कह रहे हो। Rahul forgot that we've got so many cameras around and it's live on Fancode. And thanks to Sanskar School Jaipur for being with us whole throughout this long series. Oh, careful Jagdeep. You do not want to slide down and get injured. Right, and thanks again to our hospital partners, Metromas, who've been always there and treating all the players into good effect and form, because Dr. Abhishek Gupta is the best man when it comes to sports injuries and joint replacement. So thank you so much everybody, all the sponsors to be alongside with us. Tasif Ahmad, now it is a debate. Right, Vijay Kumar says no, you did not get a touch on me, and Tasif Ahmad always does that. Let's have a look at that. Did he get a hand? I really doubt that. And because he's also gone to the lobby, Tasif is claiming it, and Sumanji will take her time, and if she wants she can go to the review. Yeah, that is what the challenger round is all about. She can go for the review. The officials, the referees can take the official review. Harshit, what do you feel? मुझे लगा कि यहाँ पर जैसे ही जर्सी थोड़ी सी बाहर निकली थी, क्या एक हल्का सा श्रिंक होता हुआ नजर आया था, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद एक टच पॉइंट मिला। जी नहीं मिलेगा, वहां पर शायद एक मुर्थल मैग्नेट्स को यहाँ पर पॉइंट मिलता हुआ नजर आएगा। मुर्थल मैग्नेट्स को पॉइंट मिलता हुआ नजर आएगा। और देखिए नवीन, इससे पता लगता है कि कितना कठिन कार्य रहता है। Very much. See, and I love the usage of technology, and I love how Jagdeep is raiding for the MURTHAL Magnets. No Ashim Malik, no Vinay Virendra. He has to put in a lot of raid points, and thank you Govind Gurjar for attempting, which is impossible for a left cover to go ahead and tackle a right raider. Right. So coming back to that use of technology, yeah, it is very important, because going into the summit round, we really want to see
who gets which position. See, that is the beauty of this challenge round also, isn't it? Yeah, you were telling me that Humpy Heroes in the next match against the Periyar Panthers, that is also getting interested. Why? See, we know there is no elimination, but for every match there has to be a reason, right? See, if I am a viewer and if I am watching this live on Fan Code, I want to have a big reason. Why should I watch the match? Of course, the biggest reason is our superstars. We will follow, Ashish Narwal. We will follow Nitin Dhankar. We will follow Rohit Raghav. Yeah, given, completely agreed. But what apart from that? What is the match holding for us? Is a very important question. Isn't it for every match? And that is what our interest also is, to make the match interesting, to make sure there is a fight. So the next match also will be interesting because there is a place to be grabbed in the second position. I'm talking about number 2. Look at that tie hold that came in from the left cover. Strong one from Rahul. Oh God, this guy is a left cover. And we were thinking that he is a raider and he was in the right cover for some reason. Come on, now Sanjay Gill has got a competition. Harshit, what do you think? बिल्कुल वहां पर शानदार प्रदर्शन देखने को मिला और बिल्कुल सही बात आपने दोहराई नवीन कि वो एक कारण है जिस तरह से हमारे साथ हमारे व्यूवर्स लगातार बने रहे कि क्या वो आउटकम उस मुकाबले से निकलता हुआ नजर आएगा, कि क्या वहां पर बदलाव देखने को मिलेगा। परंतु चलिए यहाँ पर जरूर एक शानदार टैकल नजर आएगा। एक बार फिर से लाजवाब प्रदर्शन नजर आ रहा है और लोकेश घोसलिया लगातार अपने नाम के आगे सुपर डिफेंडर का तमगा लगाने के लिए मौजूद है। लगातार अभ्यास, निरंतर अभ्यास नजर आ रहा है। और पिछली बार जब हमने देखा था, हम इनके बारे में हमने शुरुआत से बात की थी, लोकेश घोसलिया बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट इनकी नजर नहीं आई थी सर्वाइवल राउंड की शुरुआत में। परंतु जिस तरह से हमने इनके बारे में चर्चा की थी नवीन कि ये खिलाड़ी, और अब ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ की तरफ बढ़ा है खेल, इस बार जरूर एक और पॉइंट अरावली एरोज को मिलेगा अच्छे अंदाज से। ये देखिए एक और टच पॉइंट यहाँ पर लेकर गए हैं गंगाराम। Very well done. Very well done. See, that's what I was trying to tell you. See, I'll tell you something. When you know that your skill is left cover, why play right cover? I did not understand that. It's a left raider, Gangaram, who came in. You could have shift sides. Manish Gill would have understood that. And you could have shift sides to become the left cover there, Rahul. Manish Gill needs to understand that. And now Govind Gurjar left cover. Did he do something? Did he? No, raider out is the question. Very, very good effort by Yogesh, by MURTHAL Magnets. But we'll have to see if how many points, or yeah, it is in contention. The decision came as raider is out. But Govind Gurjar trying the turn and tumble across, did not get it. And very, very strong effort by Yogesh to cross the midline. What's the discussion all about? यस, एक बहुत ही शानदार स्ट्रगल वहां पर नजर आया और जिस तरह से एक बार फिर से यहाँ पर रेफरीज में चर्चा जरूर हो रही है, एक बार फिर से ऑफिशियल रिव्यू यहाँ पर मांगा जाएगा। और मांगा क्यों भी नहीं जाए जब टेक्नोलॉजी का इतना फायदा युवा कबड्डी सीरीज फैन कोड पर हमारे सभी दर्शक लुत्फ उठा रहे हैं। देखना होगा, कपिल गुर्जर ने यहाँ पर प्रयास किया, एक हैंड को जरूर ध्यान से रखिएगा, लोकेश घोसलिया ने पकड़ा था परंतु उसके बाद इस हाथ पर कपिल गुर्जर का काम था लगाम लगाना। क्या लग रहा है आपको? No, see, I'll tell you something. See, he's pointing towards the right leg. What Yogesh pointed out is very, very correct. He was pointing towards the right leg. Govind Gurjar started that tackle and everybody fell to that actually a big trap that was set up by Yogesh because they did not expect the turn and tumble will be so nice. So the right leg of Yogesh, if it is in the lobby, then he is scoring a super 8 with 4 points. Sumanji is not sure. She's completely relying on the video referral. I guess we'll have to see that once again. If the right leg of Yogesh is inside the lobby, then it is 4 points for sure. If he is outside from the lobby, then 4 defenders will breathe a sigh of relief and they'll come back into the court. So it is a big decision coming. It is Lokesh Gosalia, Govind Gurjar, Kapil Gurjar, everybody there. Yeah, this is the moment. Look at that. Govind Gurjar tries this. And with Kapil Gurjar going for the ankles, he cannot get the ankle hold. The turn and tumble was fabulous by Yogesh. Govind Gurjar is completely out of control. And then the right corner also is not in control. Even Lokesh Gosalia came across from there. And it is here that it is going to be very, very decisive. If Yogesh's leg, right leg, I'm very clear on this. If the right leg is inside the lobby and he is put his left hand across the midline, it's still inside, it's on the line, and nobody bothered about the right leg.
Look at that. Nobody bothered about the right leg, and the left hand goes and crosses the midline, and the right leg is still in the lobby, which is very active. It is very, very active. Now it is still there. Raider out. Right. 4 defenders will breathe a big sigh of relief. That was very close. That was very, very close. क्योंकि वहां पर लॉबी के अंदर कोई भी हिस्सा नहीं था, लाइन पर जरूर आपने सही कहा नवीन की वहां पर हिस्सा पर एक बार ऐसा लगा कि कपिल गुर्जर और पूरी तरह से उन्होंने मिस किया उनके राइट लेग को, परंतु चलिए इस बार यहां पर गंगाराम कहीं भी उनको पकड़ने का अपॉर्चुनिटी यहां पर मिस नहीं करेगा। मुर्थल मैग्नेट्स का खेमा शानदार डबल साइज पर यहां पर पीछे से जाकर डाइव लगाई मनीष दुल को, ये देखकर अच्छा लग रहा है कि वो भी जिस तरह से यहाँ पर समिट राउंड से पहले अपने डिफेंडर्स को तैयार कर रहे हैं, अपने रेडर्स को तैयार कर रहे हैं। अब रेड पर यहाँ पर आपको जाते हुए नजर आएंगे जगदीप, राइट रेड के साथ ये शुरू करेंगे। ये भी बहुत कमाल रेडर है, अच्छा प्रदर्शन उन्हें जब इन्हें मौका मिला है और लगातार दूसरी बार ऐसा देखने को मिला है यहाँ पर नवीन कि थोड़ा सा एक निकल आता हुआ नजर आया। हमने पहले भी देखा जगदीप को एक दफा जब रेड कर रहे थे उतना ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में नजर नहीं आ रहे, तो क्या एक छोटी सी इंजरी भी हो सकता है? Very much. And going Gurjar. He goes in for the pursuit. He's going into Gurjar is so confident. Will he walk into the lobby? Will he walk into the lobby? क्या आप वो लॉबी पे जाएंगे? मिला पॉइंट? नहीं मिला शायद. Oh मिला. Oh nice pursuit. Right. Jagdeep was struggling there in the court of the Aravali arrows. Oh that was close. That was very very close again. इस बार भी बहुत ही वहाँ पर नजदीकी मामला था। जिस तरह से आप देखते हैं अक्सर क्रिकेट के क्षेत्र में जब रन आउट की तरफ वहाँ पर एकदम बल्ला कब अंदर आया क्रीज के अंदर, कब वहाँ पर बॉल जाकर लगी, बिल्कुल उसी अंदाज का यहाँ पर भी एक नजदीकी मामला था। परंतु चलिए अब नजदीकी से प्रदर्शन देखना चाहेंगे हम परविंदर का। बिल्कुल आपने सही तरह से कहा था शुरुआत में नवीन की ये एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो प्रशंसा के पात्र आज बन सकते हैं। अपनी टीम के लिए आज अच्छा मौका है और ये भी देखकर देखिए सबसे पहला प्रश्न तो नवीन मेरा ये रहेगा आपसे कि मैं कई चीज़ों के साथ आपको एक्सप्लेन करता हूँ सिचुएशन। पहले डू और डाई रेड की तरफ देख लेते हैं। परमिंदर की राइट रेड के साथ ये शुरुआत करते हुए नजर आएंगे आपको। राइट कवर पर कपिल गुर्जर, लेफ्ट कवर पर गोविंद गुर्जर। और जब से आपने कहा है ना कि ज्यादा फ्लिक मत कीजिए अपनी पोजीशन में, तब से कवर क्या अच्छा कर रहा है जी। नहीं इस बार भी शायद क्या पॉइंट मिलता हुआ नजर आएगा। We will talk guys, we will talk. That's what Sumanji also said. Naveen and Harshit are doing a good job. I guess they're doing a good job in talking. And Sumanji says don't talk. Right. Yeah, the defense positions have not been changed in this match too much like in the previous games for the Aravali Arrows. And it is Raider out. Right. Once again going towards the Aravali Arrows, and somewhere I am really feeling that now this is a very very good opportunity for the Aravali Arrows. They have to think about the second place. Super tackle, not right. 2 points for Aravali Arrows once again, and that's the end of the first half. Also very very quick raid that was put in. The back hold and even the block not coming into good effect, but somewhere Aravali Arrows are leading this, and this is what they will really want to end the match also with a score difference of at least 6 or 7 points, so that they are in contention with the second place, because that is up for grabs. That's really really important. Until now they have done well, but I want to see Jay Bhagwan coming back to raid, and that will create even more a bigger difference as we took in some highlights of the first half now. चलिए हाईलाइट की तरफ यहाँ पर चल लेते हैं सीधा। सबसे पहले जब सिक्का उछला गिरा था यहाँ पर एक बार फिर से पक्ष में सिक्काओं के अंदाज में टॉस जीत कर पर मुर्तल मैग्नेट के बाबू ने कोर्ट का फैसला लेते हुए नजर आए। कपिल गुर्जर के विरुद्ध अरावली एरोज के विरुद्ध किस तरह का प्रदर्शन आपको एक बार फिर से शुरुआत में नजर आया। आशुमलिक ने शुरुआत जरूर की थी अपनी टीम के लिए, शुरुआत जरूर उमेश पवार ने की थी अपनी टीम के लिए, परंतु उसके बाद से निरंतर सब्स्टिट्यूट नजर आए। ज्वालाराम गंगाराम ने कुछ अच्छा प्रयास किया, कुछ अच्छे बैकबोल नजर आए, लगातार एक एस्केपिंग रूट ढूंढने का प्रयास किया। राम कुमार का भी वहां पर शुरुआत में ऐसा नजर आया कि इंजर्ड हुए, जिसके बाद से ज्यादा मैच पर नजर नहीं आए। दोनों ही टीम से टैकल्स अच्छे देखने को मिले, टैकल पॉइंट दोनों ही टीम से बहुत सारे कमाए हैं, और दोनों ही टीम के लिए नए नए रेडर्स आपको मैच पर नजर आ रहे हैं, चाहे गंगाराम हो, चाहे वहां पर जगदीप हो, मुर्तल मैग्नेट्स हो, चाहे वहां पर योगेश हो, और वहीं पर अरावली एरोज के लिए आपको राजीव सिंह नजर आए, तौसीफ अहमद नजर आए, गंगाराम ज्यादा से ज्यादा रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। See, the whole point is Mutual Magnets wants to have different raiders.
they haven't changed much in the defense. In fact, Vijay Kumar is there, Manish Dul is there, Kishan Dul is there. So they are keeping the defense wall the same apart from Sanjay Dul. They want to have extra raiders because they cannot afford an injury. See now what has happened with Vinay Virender, they can't afford that in the summit round. So they want to keep Ashu Malik and also Umesh Pawar safe and then figure out other raiders. And I'm happy to see and I think nobody much have noticed this. The font of our graphics also has been changed to a little more bolder and little more nicer looking font. Lovely work by our team as well onto that. And we will now slip into a short little break and come back when the second half begins in this all exciting match where Aravali Arrows are trying to win this to secure the second place. Okay, so welcome back guys. एक बार फिर से आप सभी का चैलेंजर राउंड के अंतिम दिन में आज के दिन के दूसरे मुकाबले में आपका हार्दिक अभिवादन करते हैं। और चलिए गुलाबी नगरी जो मेजबान है यानी कि जो होस्ट कर रहा है संस्कार इंडोर स्टेडियम में हम सभी मौजूद हैं। रीड करते हुए आपको नजर आएंगे मनीष धुल मुरथल मैग्नेट की तरफ से जो आसानी से पिन डाउन हो जाएंगे। लोकेश गोसलिया यानी कि नवीन शानदार आपका स्वागत कर रहे हैं कमेंट्री बॉक्स में एक ऑल आउट के साथ। This is a second all out for Murthal Magnets. Just one man standing there. Manish Dul just wanted to get the bonus point. I do not think he got the bonus as well because it was a wrong attempt on the bonus. He lifted the wrong leg rather than lifting the trailing leg. He lifted the landing leg. And now Jwalaram, how many has he got? After the all in, it is once again going to be a multi-point raid. Yeah, 2 points for Jwalaram. The turn and tumble working very nicely, and then the left cover. Once again Rahul trying his best but could not push out and dash away Gangaram from the lobby. So as expected, Aravali Arrows kind of fighting it back, but I want to see Dean Bhagwan come into this effect because they want good raiders. I know Gangaram is doing a good job, but you will need that brute force because Murthal Magnets trying to operate with the second line of raiders. Oh, marvelous Dupki there. And Jagdeep gets a point that was really eye-catching. जी हाँ, सच में देखकर मजा आया जिस अंदाज में कपिल गुर्जर। और इनके बारे में यहाँ पर देखना चाहेंगे कि ओवर 100 से ज्यादा अनसक्सेसफुल टैकल्स हैं इनके पास। जरूर यहाँ पर तीसरे पायदान पर आपको मौजूद मिलते हैं जिस अंदाज में टैकल्स करते हैं युवा कबड्डी सीरीज में। एक बहुत Harshit, repeat that again. First time I'm hearing something that you are speaking against the player from Jaipur Police. Okay, come on, repeat that again. 100 से ज्यादा अनसक्सेसफुल टैकल जरूर है, परंतु इस खिलाड़ी के बारे में क्या कहेंगे। गंगाराम एक बार फिर से अपनी टीम के लिए कार्य कर रहे हैं। और देखिए नवीन, सच में अगर हम बात करें तो कपिल गुर्जर नो डाउट एक बहुत अच्छे डिफेंडर है, परंतु उसके बावजूद जिस तरह से हमने इनके अनसक्सेसफुल टैकल्स की बात की है तो बहुत सारे अनसक्सेसफुल टैकल्स आपको करते हुए नजर आती है। अक्सर अरावली एरोज का खेमा टॉप डिफेंडर्स में जरूर ये तीसरे पायदान पर मौजूद होते हैं, परंतु इस अपने आंकड़े को करना चाहेंगे। Yeah, absolutely. Oh, if he would have tried a little more, Jagdeep, he could have pushed the defenders and could have crossed the midline. But that was a very weak effort by Jagdeep, I should say. He was very close. But once again, Lokesh Gosalia's back hold and Jagdeep not struggling enough. And I guess he's carrying an injury there. Slight bit of niggle from Jagdeep. Right, they're just talking about Kapil Gurjar there. See, I understand. Let me not be a devil's advocate. Let me just give it to Kapil Gurjar. If you say 100 unsuccessful tackles, I will say okay, 50% of them would have come in with going to assist the corners, okay, and also somewhere a few percentages will be going in as of course some miscellaneous points for the Aravali Arrows. But 50% of the unsuccessful tackles is all self-inflicted.
It is all self-inflicted. I completely understand that. And as a captain, you cannot afford to do such mistakes. As once again, Lokesh Gosalia has been really nicely defended off by Parvinder. He is trying to be in that kick of the events for the Murthal Magnus to be that third raider. Right, so Kapil Gujjar cannot afford to do that mistakes in the summit round and in the bigger leagues or bigger franchisee teams that he will probably eyeing to play. There you will have to, be very, very stringent, very strict on not giving away easy points to the opposition. बिल्कुल, और आपने सही कहा कि जिस दृश्य को आप अपने मन में बनाकर रख रहे हैं कि जिस चलते आप आने वाले समय में या तो आप इंडियन टीम को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं या फिर जो भी आपका गोल है, अगर आप वहां तक पहुंचना चाहते हैं, तो वो जो टैकल सक्सेस रेट है जो 41.कुछ, परंतु ये देखिए आप इस स्ट्राइक रेट के बारे में तारीफ करनी होगी जिस अंदाज में 2 और पॉइंट, और बिल्कुल यहाँ पर प्रशंसा के पात्र यहाँ पर लगातार बन रहे परविंदर। जिस तरह से डाउन किया गोविंद गुर्जर ने कंप्लीटली मिस किया, उन्हें एक बहुत अच्छा गैप बनाया क्योंकि वो चेन नहीं आई थी वहां पर, सिर्फ वहां पर सिंगल हैंडेडली जा रहे थे गोविंद गुर्जर शायद डैश करने, ब्लॉक करने, और चेन टैकल्स की महत्वता के बारे में हम लगातार बात करते हैं। इस बार जरूर तौसीफ अहमद ने शायद बोनस की प्राप्ति की यहाँ पर मांग की है। Yeah, absolutely. He tried it well on the running and turning bonus, but then we'll have to see if he's crossed the bonus line very correctly. And somewhere, Parvinder getting into his own, and the running hand touch. Did he get him? I do not think so. Yeah, he's got the bonus though. He's got the bonus. Not a problem. Look at that running hand touch, and Vijay Kumar was safe, and he did not even go into the lobby. That's also safe for Tausif Ahmed. That's once again Parvinder gets Tausif Ahmed now. Is it or? There we go. Ankle hold attempted, does not get it right, Tausif Ahmed, and goes back. He's there on the bench. Correction. He's there on the mat. I think it was Mahendra Chaudhary. Yes. बिल्कुल, वहाँ पर महेंद्र चौधरी मौजूद थे, जरूर उन्होंने डबल थाई होल्ड करने का प्रयास किया, और परविंदर आज लगातार, नवीन जिस तरह से आपने शुरू में ही कह दिया था, तो आपके शब्दों को उन्होंने बिल्कुल दिल पर लिया, दिमाग पर लिया, और उन्होंने उस तरह से अपने प्रदर्शन को भांपा है, अच्छा तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया है। और इसीलिए कहा जाता है कि जब जब अच्छे खिलाड़ियों को मौका मिलता है, उन मौक़ों पर वो चौका लगाने के लिए जाने जाते हैं। जिस तरह से आप अपॉर्चुनिटीज़ मिलते ही आप उस पर क्लिक कीजिए, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कीजिए, ये किसी भी खिलाड़ी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। परंतु चलिए नवीन, मैं आप एक हाफ टाइम से पहले भी आपसे एक प्रश्न पूछना चाह रहा था, उस प्रश्न को अब उजागर करना चाहूँगा। देखिए, मुर्थल मैग्नेट्स ने बदलाव किए और रेडर्स में इस बार जरूर बदलाव नजर आएगा अरावली एरोज से, क्योंकि अब गंगाराम उन्हें बेंच पर बैठते हुए नजर आएंगे। Yeah, that was a nice block and Gangaram was pinned down. Yeah, to continue with the question, what was that? जी हाँ, मैं ये जानना चाह रहा था निश्चित तौर पर नवीन की, सबसे पहले तो मैं एक वो मेरा आउटकम रखना चाहूँगा जो मैंने देखा था पेरियार पैंथर्स बूस्टर राउंड में लगातार उन्होंने 7 जीत प्राप्त की। उसके बाद उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट करने चालू किए थे। वहाँ से आशीष नरवाल को उन्होंने अपनी बेंच पर बिठाया था, नवीन शर्मा को थोड़ा सा रेस्ट दिया था। उसके बाद से वो थोड़ा सा फेज वहाँ से ऐसा आया पेरियार पैंथर्स का अंत में जाते जाते बूस्टर राउंड में कि थोड़ा सा वहाँ पर जीत ढूंढने के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ रहा था, और यहाँ पर चैलेंजर राउंड की शुरुआत में भी उस तरह का मोमेंटम उनके पास था नहीं जो ढूंढना चाह रहे थे। तो क्या नवीन, अगर यहाँ पर देखिए अभी तक की परिस्थितियाँ सही है, यहाँ पर उसी के बीच मेरा दृश्य इस छोटी सी नन्ही परी ने लिया था। मैं प्रश्न को आगे करता हूँ, जिस तरह से क्या यहाँ पर अभी तो बड़ा वहाँ पर प्रैक्टिकल गेम चल रहा है, मुर्थल मैग्नेट अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। हाफ टाइम तक हमने देखा था सिर्फ 5 रेड पॉइंट थे, सिर्फ 5 रेड पॉइंट से टैकल पॉइंट से डबल थे, और अब जरूर परविंदर अच्छा प्रदर्शन करें। परंतु अगर ये बड़ी लीड से अरावली एरोज इस मुकाबले को जीतता है तो क्या थोड़ा सा एक मानसिकता पर फर्क पड़ सकता है? क्या एक जीत के साथ समिट राउंड में जाने का एक टारगेट भी हो सकता है मुर्थल मैग्नेट्स का? Yeah, that's a really good point of discussion as Parvinder once again gets out on a super tackle situation and in a do-or-die raid. Was very tough, but got Rajiv Singh very easily, and Tausif Ahmed now gets it on the left cover, and it is once again the captain, is it, who has to go back? Yeah, Manish Dhul has to go back now. He understands that he made an error. He did not go back in time. There we go. It was a very easy one, and Tausif Ahmed is quick. He's fast. And once again a super tackle situation where Parvinder will walk in. Yeah, just talking about that break that Periyar Panthers took. See, it was a much required break, because
Ashish Narwal was struggling with a lot of bandage on his body. His entire left hand was bandaged, his head was bandaged. So that break was much necessary. So after coming out from the break, see, I understand the start will not be as good as it was earlier. Okay, see, I understand that. But somewhere what happens, if you don't give the important break for such a long series, when will the bench strength be tested and when will the bench strength get some confidence? See, even without Ashish Narwal, I remember they won 2 matches. So that gave a lot of strength for the coach and a lot of confidence for the players that they can also win without Ashish Narwal. So that gives that self-confidence a lot. And point number 2, a break will never affect the outcome of the game. It depends on you. Whether you have taken the break in a nice way and then come back completely, that switch on, switch off, that is very important for any sportsman. Have you done that? Because you can switch off easily, but you need to switch on also. That switch on wouldn't have happened, but Tausif Ahmed, has he switched on the red button for a multiple point? No, I don't think so. I don't think so. It's a tackle that could have changed this match around, but MURTHAL Magnets have snatched this, I guess, very, very slenderly. It was a thin hairline difference between the midline and Tausif's right hand. A very good combination tackle. Back hole coming in from, I guess, Vijay Kumar. And now it's a super tackle situation for Jagdeep with 2 to go in a do-or-die race. जी हाँ, जरूर यहाँ पर सुपर टैकल की सिचुएशन ऑन है। गोविंद गुर्जर, कपिल गुर्जर की यहाँ पर जोड़ी है और इस बार जंप लगाया जगदीप। ये देखकर अच्छा लग रहा है, ये देखकर अच्छा लग रहा है यहाँ पर कि अब जगदीप और परविंदर कुछ रेड पॉइंट्स लेकर आ रहे हैं। पर तो नवीन, चलिए मैं एक बार फिर से मेरे प्रश्न को आप तक अच्छी तरह से फ्रेम करके पहुंचाना चाहूंगा। मेरा सिर्फ कंसर्न इसलिए था क्योंकि हाफ टाइम तक सिर्फ 5 रेड पॉइंट्स यहाँ पर मुर्थल मैग्नेट्स के पास थे। हालांकि बिल्कुल आपने सही कहा कि हाफ टाइम तक आप किसी इससे पहले इथियोपिया स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का समय हो चुका है। नवीन, मैं कुछ ऑर्गेनिक फूड यहाँ पर खाने जा रहा हूँ, क्या आप एंजॉय करना चाहेंगे मेरे साथ? Yeah, very much. Along with the organic food, we'll also look at Christian Bull's tackle today. He's got a high five, and it is nice to see that the strategic timeout has been very well placed. It was much required strategic timeout in that last 10 minutes of the second half. Very much required, and we'll be seeing more of this in the summit round as well. But today, Gangaram has also played his part. Yes, yeah, I understand when you speak about the break that is always required. And that's what I was trying to say. The switch on is more important. See, you switch off from the game, take a break, go back. Then when you come back, you'll have to come fresh. You can't have any rusty feelings. You'll have to come back fresh as we count the last second innings out from the strategic timeout. Yeah, done and dusted. Let's begin. And we'll see, I guess, the first all out for MURTHAL Magnets. Yes, that is what it is. Last man standing could not save the ARAVALLI arrows, and Govind Gurjar has to go back. And that's the first all out for MURTHAL Magnets in this match against ARAVALLI arrows. Very, very well done. Govind Gurjar did not understand where should he do the dupki. और यहाँ पर अब एक बार फिर से ये ऑल आउट बराबरी पर तो नहीं, परंतु लीड यहाँ पर बिल्कुल बराबरी की तरफ ले जाने के नजदीक ले आएगा मुर्थल मैग्नेट्स को। और इस बार क्या फिर से एक और रेड पॉइंट यहाँ पर लेकर गए योगेश, और मुर्थल मैग्नेट्स पूरी तरह से इन्हीं रेडर्स ने मेरे प्रश्न का जवाब दे दिया है कि जिस अंदाज में। और देखिए नवीन, मेरा वहां पर ब्रेक से ज्यादा जो महत्व था वो एक हार पर था। अब तो देखिए वहां पर जरूर मुर्थल मैग्नेट्स ने पूरी तरह से पलटवार कर दिया है। और मैं सिर्फ इस मुकाबले की बात नहीं कर रहा था, जब हम कमेंट्री बॉक्स में होते हैं, हमारे व्यूवर्स को हर तरीके से वहां पर हर सिचुएशन में आंसर देने का प्रयास करते हैं। तो मेरा सिर्फ यही प्रश्न था कि यहाँ मुर्थल मैग्नेट्स की सिर्फ बात नहीं है, आप चाहे किसी भी टीम की बात कर लें, लगातार जीत के साथ आ रहे हैं। क्या एक हार प्रभावित करती है उन्हें समिट राउंड में जाने से? परंतु क्या एक बार फिर से अरावली एरोज के लिए गंगाराम कुछ पॉइंट लेकर गए? जी हाँ, बिल्कुल लेकर गए। एक अच्छा रेड पॉइंट यहाँ पर मिलेगा, पूरी तरह से ध्यान आकर्षित कर लेता है खिलाड़ी। Yeah, absolutely. And Manish Gill once again struggling today because I do not understand why. I guess he's not feeling okay with Sanjay Gill not around and the hand and the chain with Sanjay Gill not feeling okay with another defender because he is looking a little out of place today, Manish Gill, and he is committing errors in that left cover position. See, I tell you something, Rahul is a very good left cover.
Manish Bill, and this is nice. Parvinder, the turn and tumble going towards the midline. The outward turn, very, very important. Turning towards the lobby against the right corner's block. Look at that. Very well done. Marvelous. Mahendra Chaudhary actually cut the angle out. But Parvinder, see, this is what I like to say for your question once again. If Parvinder, if you watch what he did, and once again, Rahul is a good left cover is what I said. But even he can't stop Jwalaram today. Another 2-point lead. Yeah, that was Rahul. But then Jwalaram too quick. See, the dash has to come towards the midriff. It has to come towards the waist of the raider. And that is where the maximum force will be, because you can't go for the top one and you can't go for the legs in the dash. But here, they've gone for the legs in the right corner. And Parvinder has been pinned out. This game is getting too fast for any explanation. Harshit. चलिए आखिरकार यहाँ पर अरावली एरोज के लिए कुछ डिफेंस में यहाँ पर पॉइंट्स मिलता है। और देखिए ये बहुत फास्ट है ना, बिल्कुल यहाँ पर बहुत ही तेजी के साथ देखिए यूईएम जरूर अब आए हैं। उन्होंने कहा कि चलिए हम थोड़े से गेम को यहाँ पर स्लो डाउन करने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि बहुत जल्दी जल्दी वो शब्दों की खदानों में से लगता है कि शब्द निकालते चले जाइए। इस तरह कबड्डी का अनुपम खेल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। गंगाराम अब 4 का डिफेंस है, तो क्या थोड़ा सा आपको गेम यहाँ पर स्लो डाउन होता हुआ नजर आएगा। 4 पॉइंट की लीड है अरावली एरोज के पास। ये अक्सर डीप जाना पसंद करते हैं, मिड रूट यहाँ पर ढूंढने का प्रयास करते हैं विजय के बीच में से, परंतु चलिए इस बार ज्यादा अंदर नहीं जाते हुए नजर आएंगे। अब जगदीप यहाँ पर ये अच्छा प्रदर्शन उन्होंने किया है। Yeah, see, I'll just continue my point where I was just speaking about Parvinder. See, when Parvinder came in and another dash and Jagdeep, has he got 2 points? Jwalaram somewhere should have just sticked on to raiding. Why should he go into the defense and give away 2 points? Come on, this is what I really don't like when Aravali Arrows try to do everything. Devan Gujjar and Jwalaram. Gangaram, he was so good. He was so good in bringing the raid points. And what happened suddenly trying to put your effort in the tackle? Look at that. Jagdeep pushes Gangaram away, turns, stumbles, reaches and crosses the midline. Before that also touches. Oh, super raid by Jagdeep. He also touches Govind Gujjar and another defender in that meantime. And now see, the pressure is on Tausif Ahmed to go for the raid. Look at this. Gangaram goes in, dash not proper, pushes him away, Jagdeep, and then touches Govind Gujjar and another defender in the meantime. So why do you have to be the jack of all, master of none? You were doing so good in the raiding department, Gangaram. Right, we'll see when will Aravali Arrows get that straight. Because that is the reason why. See, they are the team, they could have finished in number 1 or 2. But because of the constant changes in positions, constantly trying to do everything, that is where they are now today in this position as another strategic timeout comes in. Right, just talking about Parvinder, I'll just finish that point. See, when he started off the match, he did not look in good touch. He did not look at all he could somewhere come in and fill the shoes of Vinay Girinder. But what happened? The momentum. See, that's the reason Lokesh Gosalia, of course, has got a high five. Thanks for that confirmation. But talking about Parvinder, he struggled against Lokesh Gosalia. And everybody, even Umesh Paul has struggled against him today. He's looked really nice in the last segment today. So Parvinder was not in a good form. The momentum, he took it away. And that is what Ashish Narwal couldn't do when he came down off the break. And that's why, Archit, if you remember, I always keep saying that momentum is the key in kabaddi. You have to change your strategy and games even in the 40th minute. It is not in the next match. If your form is not right, you have to change it in the match itself. And somewhere, coaches also try to substitute you immediately and not giving you the extra bit of time. Even that is a little bit of concern where the coaches need to believe in and give the extra little bit of time. Don't change you if it is not working. Comes in to do it. Nothing taking away from the 5 minutes of the game. Then Christian Bale went all the way close from the right to the left foot. And the attack actually came in from Vijay Girinder. So he gets the tackle point. Once again, the verbal warning from Sumanji after a very long time. Murthal Magnets leading this by 1 point. And now it's time for the come on! Somebody go for his top body! Somebody go for his upper body!
my God! All out! And Parvinder has changed this match. Murthal Magnets did not look like winning this, but this double top hold was not strong enough from Mahendra Chaudhary. I think Kapil Gurjar should have left the ankles, should have gone for the upper body of Parvinder, which did not happen. Only utilizing the height. This is the big one. Wow! This is what is called taking the opportunity from both the legs, what he's got. I say legs because it's the legs that worked out for Parvinder rather than the hands. फिनोमिनल फिनोमिनल हमने वहां पर प्रदर्शन देखा परविंदर का, और क्या जितना कहा जाए शब्द शायद कम पड़ जाए जिस तरह का प्रदर्शन, जिस तरह का स्ट्रगल उन्होंने दर्शाया। और एक बार फिर से करामाती कृष्ण धुल लगातार अपनी टीम के लिए शानदार प्रदर्शन जारी रख रहे हैं। एक बार फिर से बैक होल्ड के लिए गए, गंगाराम को आसानी के साथ शिकार बनाया। और हमारे दर्शकों, आप बिल्कुल सही देख रहे हो कि 1 से 1.5 मिनट पहले ये लीड पर था अरावली एरोज का खेमा, परंतु पूरी तरह से बदलाव। 6 पॉइंट की लीड अब यहाँ पर मुरथल मैग्नेट्स के पास है। ये है कबड्डी का खेल, और इसीलिए मुरथल मैग्नेट्स को कहा जाता है द मोस्ट कंसिस्टेंट टीम। और जो टीम वापसी करना जानती है, जो टीम लीड कंसोलिडेट करना जानती है, उस टीम का असल नाम है मुरथल मैग्नेट। जिस तरह से नवीन ने बिल्कुल सही बताया परविंदर के बारे में, उनके मोमेंटम के बारे में, कि आप उसी मुकाबले में अपने मोमेंटम के जरिए अपने फॉर्म वापसी कर सकते हैं। फॉर्म आपके लिए भले इतना अच्छा ना हो, परंतु उसी मुकाबले में आपको कबड्डी इतने सारे मौके देता है कि आप मोमेंटम के साथ साथ की अच्छी स्किल देख रहे थे कि कृष्ण धुल आ रहे हैं बैक होल्ड के लिए। सही समय पर डुबकी लगाई, बैक डुबकी सी लगाई, और पीछे की तरफ रिवर्स गियर डालकर पीछे की तरफ मिड लाइन की तरफ चलेगा। ये देखकर अच्छा लगा। That's a nice one. That's a nice one. He noticed Krishan Dhul actually charging behind him. I guess the footsteps was what Govind Gujjar heard, because it was strong footsteps by Krishan Dhul. Once again, Parvinder can take a lot of time. But let me tell you something. I want to ask one big question to Phulchand Gurjar ji. Why is Jai Bhagwan not on the match back? I know when you are leading. I know when the Murthal Magnets got that equalizer. Even if Jai Bhagwan has a little bit of an injury concern, I will really want him to see Raid, because it's only him now who can bring you back into this game. As he takes a strategic timeout once again, it is a coach's timeout. I guess he's telling something that is very important, but I really want to see Dean Bhagwan coming back, because I understand whatever strategies you plan, it will not be as efficient as a raider's skill. It's only one specific skill that every raider will possess, and for even now Aravali Arrows, if they want to win this match and try for that second place, which is so important, book your PNR number instead of a waiting list of the train ticket in the berth that you are waiting. Your waiting list in the ticket. If you close down the second position, it's a PNR flight number that you will be getting to the finals. Why, Harshit, do you have any idea what is Phulchand Gurjar ji doing without getting in Jai Bhagwan? बिल्कुल, ये प्रश्न ही रह गया है नवीन वहां पर कि क्यों वहां पर जय भगवान नहीं थे। कि अगर इंजरी का कहीं कंसर्न था तो मेरा ये प्रश्न ही रहेगा कि क्यों फिर स्टार्टिंग 7 में जय भगवान का नाम था, क्योंकि अगर वहां पर इंजरी कंसर्न सच में था, इस बार देखिए लगातार उस यहाँ पर गैप को भेजने का प्रयास गंगाराम करते हैं, परंतु शायद क्या यहाँ पर एक खिलाड़ी चोटिल हुए हैं। जरूर यूईएम यहाँ पर मैट पर आया है, और विजय शायद वहां पर जाते जाते गंगाराम ने जब वहां पर एक हाथ लगाया था, क्या उनके दांतों पर जाकर वो लगा था, इसके चलते थोड़ा सा इंजर्ड जरूर महसूस कर रहे हैं, और एक सब्सिट्यूट होता भी अब आपको तुरंत नजर आएगा। हालांकि जरूर नवीन आपके साथ कमेंट्री करते करते इतना हमें पता लग चुका है कौन सी ज्यादा सीरियस इंजरी है, कौन सी नहीं। This is not serious. This is not serious. Don't worry about it. Because see, I'll only be concerned if it is on the legs. And yesterday I was not too concerned for Vinay Virender because it was the hand. So the hand will heal better and quicker. You know, in the game of kabaddi, it's all important for the legs. But yeah, every injury has its own pain. Let me not take away anything out of it. Pain is pain, but the recovery time is much faster if it's the upper body. And now Parvinder in a do-or-die raid, he's got all the options. He will turn, tumble, but then Kapil Gujjar blocks one on the right time and gets the support of Lokesh Gosalia in the ankle hold. And good combination tackle from the right cover and the left corner. See, when you are in your right position, you get the right tackles. What was Gangaram doing in the right cover?
I do not understand. And when Kapil Gurjar in his proper position, you get a proper point. See, that is Kabaddi. It's very simple. Why do you complicate things by changing it constantly and consistently? बिल्कुल, स्टिक टू द बेसिक, ये एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर कहा जाता है कि आप हमेशा अपने बेसिक्स पर अड़े रहना चाहते हैं। इस बार जरूर देखना होगा कि क्या हैंड टच किया है या फिर नहीं राजीव सिंह ने, देखना होगा। और किसे शिकार बनाने की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जरूर नंबर 6 जर्सी को शायद वहां पर क्या दोनों की चेन के बीच में से ऐसा लगा कि उनका हाथ चला गया। ऐसा लग रहा था कि क्या योगेश को अपना शिकार बनाया राजीव ने। और इस बार एक और बार रिव्यू का उपयोग किया जाएगा, टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा। हमारे टीवी एम्पायर कार्य थोड़ा सा बढ़ जाएगा क्योंकि बड़ा क्लोज यहाँ पर ये भी नजर आया, बहुत क्लोज नजर आया यहाँ से नबील। Yeah, it will be rather checked a lot of times, and also just checking if something there inside the lobby and the end lines. Yeah, that's all fine. That's all really fine. It goes in deep. Rajiv Singh stretches his right hand on top of Yogesh, who's raided so very well today. Yeah, let's come back. Yeah, this point can give 1 point. That's fine. The referees will take care of that. But my big question, let's come back to that discussion where imagine if Jai Bhagwan would have been in the situation. Just imagine, you would have inflicted an all-out, you would have at least put up that big fight, and you would have made the next match also very, very interesting. And Humpy Heroes would have fought tooth and nail against the Periyar Panthers to safeguard their second position. Now, if Aravalli Arrows lose this game, that's it, game over. And the series will be said that, okay, MURTHAL Magnets will finish on top, and Humpy Heroes, even if they lose against the Periyar Panthers, they're not going to lose out on the second place. So that is the big question to Fulchand Gurjarji. 43-39, and there could have been no other raider apart from Bhim Jai Bhagwan, who's got 211 raid points before this match. He was substituted, I guess, in the first half itself. बिल्कुल, और शुरुआती समय में यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया गया था। और बिल्कुल आपने सही कहा कि इस समय अगर जय भगवान होते एक बार फिर से आपको पोजीशन में बदलाव देखने को मिलेगा। अरावली एरोज से जानते हैं यहाँ पर योगेश लेफ्ट रेडर है शायद किसी वजह से, क्या महेंद्र के साथ लोकेश घोसलिया वहाँ पर इनकी पोजीशन में गए हैं कि अगर कैसे भी अगर अंदर आते हैं तो एंकल होल्ड का प्रयास किया जाएगा। गोविंद गुर्जर लेफ्ट कॉर्नर संभालते हुए नजर आ रहे थे। गंगाराम की रेडिंग स्किल्स पर निर्भरता दर्शाएंगे क्योंकि आप डिफेंस में है 1 पॉइंट प्राप्त कर सकते हैं, रेडिंग में ज्यादा पॉइंट प्राप्त कर सकते हैं, परंतु कैसे करेंगे आप रेडिंग में पॉइंट प्राप्त जब आपको करामात से बचना होगा। कृष्ण धुल एक बार फिर से बैक होल्ड जिस तरह से कर रहे हैं, ये भी इनका शानदार वेपन के तौर पर नजर आ रहा है। Very much, and that's the reason I call him Chattan Krishan Dhol. The way he tackles, he's got everything under his belt: ankle holds, blocks, back holds, dashes. Wow, what a big prodigy for the Kabaddi. Yeah, and as I always say, this is KGF Kabaddi Gold Shields. You are getting a lot of gold for the franchising leagues and for of course our country. When they will play for the Indian jerseys will be worn. The Indian jerseys definitely for the South Asian Games, Asian Games, and a lot of matches there, and definitely for the World Cup of Kabaddi. So many goals to choose from. And once again, Tausif Ahmed goes, I like that just back Junun that was shown. Right, come on. And I guess he was angry on the captain. I guess he was very angry on the captain, Manish Dhul, who's struggling today. बिल्कुल, और कह रहे हैं कि चलिए भाई थोड़ा तो अच्छा प्रयास और करता, थोड़ा सा थ्रदर टैकल करने की कोशिश करता, परंतु चलिए ये टैकल चाहे हो भी जाए तो भी शायद यहाँ पर ये मुर्थल मैग्नेट्स एक शानदार अंदाज में। और देखिए कभी इससे पता लगता है मुर्थल मैग्नेट्स ने अपने बेंच का भी जिस तरह से उपयोग किया है कि लगातार यहाँ पर उसके लिए उमेश पवार, आशु मलिक, विनय वीरेंद्र ज्यादा समय तक वहां पर मौजूद नहीं रहे मनीष धुल, संजय धुल, परंतु उसके बावजूद जिस अंदाज में यहाँ पर प्रदर्शन किया है और इस मुकाबले में यहाँ पर जीत प्राप्त की है, ये सच में सराहनीय है। जितनी सराहना करें आप मुर्थल मैग्नेट्स की शायद उतना कम होगा, और सराहना सच में करना पड़ेगा। यहाँ पर 1 पॉइंट जरूर मिला है अरावली एरोज को जाते जाते, परंतु पूर्णतः यहाँ पर दर्शा दिया है
परविंदर ने पूर्णतः यहाँ पर दर्शा दिया, योगेश ने, जगदीप ने, कि ये मुकाबला चाहे कैसे भी घटा हो हमारे लिए शुरुआती हाफ में, परंतु पूरी तरह से अब तब्दील हो जाएगा मुर्थल मैग्नेट्स के खेमे में. Yeah, Coach Mandeep Singh really happy. And look at this, the last trade in a do-or-die raid. And once again, Govind Gurjar in the left corner. Come on. And Aravalli Arrows have just missed the free flight ticket that was available. It was a business class flight ticket that was available to the finals, and they have just said, okay, we will come in the train. We do not want a business class flight ticket to the finals. That's what they have told. And MURTHAL Magnets winning this and staying on top of the table of the challenger round and soaking in some highlights, and all praises for Jagdeep and Yogesh. Without the presence of Vinay Virendra, Umesh Pawar substituted off, Ashu Malik substituted off, and look at the way these lads have raided today for the MURTHAL Magnets. Jagdeep, Yogesh, and the top coach Parvinder. And that is why Mandeep Singh ji was so happy. See, I will be really happy to share the happiness with the coach when your experiments work. Okay? If your experiments work, I am also very happy, because it's happy for the sport, it's happy for the series, it's happy for the entire broadcast, which is showing a very good sport to the viewers on fan court. We are all happy. But when your experiment doesn't work out, like say when your Rajiv Singh doesn't get you points, when your Rampur doesn't get you points, when your Gangaram is trying to go and get himself out on the tackle points, then that doesn't go out, and this struggle shows Parvinder is here to stay. That's it. Period. Even if Vinay Virendra can take a little more time to come back on the match, Parvinder is here to stay. And what a message given to the coach of Mandeep Singh by Parvinder. He says, coach साहब चिंता मत करो, अगर कोई भी घायल हो जाए ना, मैं हूँ आपके लिए. And that is what I love about it. And as I said, it is just a business class ticket missed by Aravalli Arrows. बिल्कुल वहां पर अरावली एरोज के पास एक मौका था, परंतु चलिए और रेड पॉइंट्स की हम सारी बात कर लेते हैं. मुर्थल मैग्नेट जहां पर सिर्फ और सिर्फ 5 रेड पॉइंट्स है फर्स्ट हाफ के दौरान. अगले 20 मिनट में उन्होंने पूरी तरह से तब्दील कर दिया. सुपर 10 बनाया वहां पर जगदीप ने, और परविंदर ने 9 पॉइंट जिस समय पर आकर लिए हैं और जिस तरीके से लिए हैं, जिस स्किल्स का उन्होंने प्रदर्शन किया है, जो दृश्य हमने हमारे स्क्रीन पर देखे, वो सच में बहुत ही सराहनीय थे. और सराहनीय यहाँ पर प्रदर्शन अरावली एरो से आप देखना चाहते थे. ऐसा लग भी रहा था कि फर्स्ट हाफ के दौरान और शुरुआती 35-40 मिनट में कि वो पक्ष में कर जाएगा, परंतु एकदम से परविंदर नाम का तूफान आया और जिस तरह से यहाँ पर नदी से बहा ले जाता है, बहुत सारे घरों को उसी अंदाज से बहा कर ले गए. मुर्थल मैग्नेट्स 5 मुकाबले 5 जीत के साथ टॉप पर अव्वल दर्जे पर प्रदर्शन अपना दर्शाकर मौजूद है. सिंहासन रूपी सिंहासन पर बैठा है और टडोबा टाइगर्स जरूर 5 में से 5 मुकाबले हारे हैं. अरावली एरोज चौथे पायदान पर ही मौजूद हैं और अगला जो मुकाबला होगा वो होगा हम्पी हीरोज वर्सेस पेरियार पैंथर्स, जहां पर हम्पी हीरोज अगर हार भी जाता है तो आपको शायद दूसरे ही पायदान पर मौजूद मिलेगा. Yeah, see you at 8 p.m. definitely. This would have been a very interesting match if Aravalli Arrows could have won the match that we just saw. But now it's going to be the Periyar Panthers trying to save some pride. So if you ask me why do you have to watch this match, I will say Ashish Narwal should make a comeback because he's a very good raider. And see you soon at 8 p.m. And thank you so much. I am Navin Shauri and Harshit Sharma signing off. And we'll be back soon on Fan Code at 8 p.m.